Gateway District Parks and NTPC. Education partner, Sharda University, and writing instruments partner, Luxor. On behalf of the Ramnath Goenka Memorial Foundation, we welcome you to the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards ceremony, an annual ceremony that started as part of Ramnath Goenka's centennial celebrations to recognize and honor the best journalism across the country, which is now known as one of the most desired honors a journalist can receive. Ladies and gentlemen, it is an absolute honor for us to have Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari to present the awards this evening. Thank you very much, sir, for being with us this evening. The late Ramnath Goenka, founder of the Indian Express Group, was a multifaceted person. He was a freedom fighter, a politician, an industrialist, and a newspaper magnate. But more than anything else, he was an indomitable warrior for the freedom of the press, who carried his mission with unflagging zeal. Ladies and gentlemen, please draw your attention to the screen for a short film on our founder, Shri Ramnath Goenka. Freedom fighter, fearless publisher, nation builder. Ramnath Goenka was defined by the battles he chose to fight. Against the British before independence, against the government during the emergency, against the corrupt across several decades. Battles he fought often at the cost of himself, battles he fought to empower every citizen. कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्यक्षेत्र से भी बाहर अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की परिधि में अपना स्थान बनाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, और वो नाम है रामनाथ गोएंका जी का. Ramnath Goenka was born on Akshaya Tritiya of 1904 in Darbhanga village of Bihar. After his primary education, he moved to Calcutta and came under the tutelage of his maternal uncle Mahadev Lalji Dalmia. At 22, he moved to Madras to start trading in jute. There, Ramnath was influenced by Mahatma Gandhi's message of non-violent struggle. In response to Gandhiji's call for a pro-freedom English newspaper, the Indian Express was launched in 1932. It courageously gave voice to the millions of freedom fighters. The publications brought out by him during the pre-independence period and thereafter testify to his patriotic spirit and fearlessness. Fearless he was. During the Quit India movement, when Gandhiji was arrested and the press given gagging orders, Ramnath suspended the publication of the Express for a while. He said, "If we went on publishing, the Indian Express may be called a paper, but cannot be called a newspaper." At the dawn of independence, Ramnath was one of the members of the Constituent Assembly tasked with drafting India's constitution. As a member of the first Constituent Assembly, he was one of the founding fathers of the world's largest democracy. After independence, the Indian Express took to the role of nation building. Ramnath engaged some of the world's most recognized editors to bring in global standards to Indian journalism. He also played a leading role in creating the Press Trust of India. He was an imposing figure on the political scene. In the early 70s, the then Prime Minister, Indira Gandhi, split the Congress into Congress I and Congress O. Ramnath told her, "You're making a big mistake, Indu. Are you a friend or a foe? The choice is yours." In 1975, Mrs. Gandhi declared the emergency. हमें अपनी आजादी कायम रखनी है. Jayaprakash Narayan led a movement against the emergency with Ramnath support. The government's approach to the press was to tame or take over. Several fraudulent cases of income tax violations were filed against the Express. This notice was sent to the Directorate of Advertising and Visual Publicity to stop advertising
in all Express Group publications. Unlike today, in the late 70s, the government was the largest advertiser in the country. The money was exhausted. Government was putting pressure, no ads, no money was given, even being realized from private sector. To sell the ornaments of one's wife breaks one's heart. I said, आपने कुछ बेचना पड़ा है क्या? He said, yes, मुझको मैंने नेपाल में कुछ रखे हुए थे, वो बेचे कि मैं पेपर चला सकूं. That was the condition to which the paper had been reduced. During the emergency, all edits were vetted. One day when his edit was not cleared according to his liking, Ramnath ji published a blank editorial. The blank editorial became a global symbol of protest against censorship. The blank editorial, published by the Indian Express during emergency under the leadership of Ramnath ji, was perhaps one of the strongest protests ever published against censorship in India. The government forced him to resign from the board of his own company and appointed K.K. Birla as the chairman. An emotional Ramnath ji wrote to K.K. Birla, Parting with the Express is like parting with my son. but Ramnath Goenka could never be kept apart from the Indian Express. He forced his way back in control as soon as the emergency was lifted. The newspaper grew back in strength, always putting journalism first. बिजनेस और पत्रकारिता को अलग रखने का सबसे पहले अगर किसी ने देश में शुरुआत करी तो रामनाथ गोयंका जी ने की थी, और इसके लिए गोयंका जी को हमेशा याद किया जाएगा. The award instituted in his name is now the most coveted journalism award across the country. Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka. Mr. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka was the most fascinating gentleman that I ever knew. The man and the newspaper he founded inspire journalists in India and across the world. I would now like to invite Mr. Vivek Goenka, Chairman and Managing Director of the Indian Express Group, to deliver the welcome address. Honorable Union Minister for Roads, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, our chief guest and keynote speaker this evening, a host of VIP guests and dear friends who have graced the occasion today, all the 43 winners of the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism for the years 2021 and 22, distinguished members of the jury, Justice Sri Krishna, and some of the jury members who have not come, Dr. Rajkumar, Dr. Qureshi, and KG Suresh. My dear friends, it's my privilege to welcome you this evening
an evening that I am proud to say is a very special date for the Express Group and for my personal calendar as well. Because although the spirit of Ramnath ji is an ever-present one at the Indian Express, today is when we pay tribute to him by celebrating in his name what was chosen and closest to him, the finest in journalism and the finest of journalists. I had the privilege and good fortune of working and learning from him. And what always struck me was how fiercely and open-heartedly he embraced and engaged with change and disruption. And that is why the awards we give this evening are so special. Because they affirm journalism when it is being shaped and reshaped by forces the most disruptive we have seen in generations. One disruptor is technology, of course, and all of us are still figuring out what AI, artificial intelligence, will do to our newsrooms. What can we do that the latest ChatGPT version cannot? Equally significant are the structural changes we face of political and social divides, the social media armies deployed by those whom we report on, and the growing tendency of our audience to stay in the comfort of their echo chambers. Indeed, today, the very definition of excellence in journalism is contested. There is pressure on all of us in the news business that your journalism is good journalism only if it aligns with my worldview. The rest is propaganda. Taking sides, pushing extremes on the margins is seen as good search engine optimization. But the stories we celebrate today break the walls of this echo chamber. They reveal, they enrich, and they challenge our assumptions. This is journalism that explains and investigates with integrity, with a mind wide open, and most importantly, a humility that says, I am willing to listen. I'm delighted that giving the awards away this evening is our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji. Whenever I have met him in his office, he always points out to his favorite poster, which reads, I like people who get things done. Because getting things done is not easy in his ministry. From the challenge of land acquisition, to center versus state, to public versus private, and of course the thousands of moving parts that make up for any infra project. Despite all this, take a look at the things he's got done. 30 years ago, he transformed mobility in Mumbai. Now he's doing it for the nation. He ushered in the concept of the BOT model into India's road building lexicon. We have a highway network growing at the speed of 40 kilometers every day. He is leading the transition in infrastructure upgrades from brick, cement, and mortar to EVs and clean vehicles. His promise is to do away with fossil fuels almost entirely. And I must tell you, ladies and gentlemen, he drove in today in a car which runs 100% on ethanol. His initiatives in green energy are pushing for ethanol from sugarcane, from various grains, and now from even bamboo. He has set a target of 100% electrical buses in 5 years. He has a plan in place to make India the world's #1 auto manufacturing hub, and is pushing everybody around him and himself very hard for setting standards in crash testing and passenger safety. Behind this formidable work is not just the only Nitin Gadkari style of entrepreneurship. There is also the power of his collaborative energy, bringing teams together, engineers, contractors, builders, and even artists to pull each project off, be it the Mumbai-Pune Expressway 2.5 decades ago to the Dwarka Expressway he opened just last week. I'm personally aware of the fact that he is better than the best consultant I've ever come across. In an interview to the Indian Express in December 2022, Nitinji spelled out his governance vision.
doing work for those who voted for you and also for those who didn't vote for you. This is democracy, he said, because after elections are over, we can have matbhed but not manbhed. These words couldn't ring louder as we head into the elections, for they also define the attributes of the space that facilitates good journalism, going where the story takes you, and not letting how you vote decide on how you report. The stories we celebrate today are a fitting testament to this, from an investigation into the functioning of the Election Commission to the plight of women in Kerala jails, how a tech giant undercut small businesses, how the Russia-Ukraine war affected the Indian railways. We have a book that brings George Fernandez back to life, and one that tracks the diplomatic history of India-China to understand what the future holds. This is the best work by the best in our profession. Nothing renews journalism more powerfully than celebrating this each year. So please join me in welcoming our Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, whom even the opposition secretly wants him to win. To share his thoughts with us and to give the 17th Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism. Thank you, and please come up, Mr. Gadkari ji. Thank you, sir. It gives me great pleasure to introduce you to the illustrious jury of the 2021 and 22 awards. I would like to thank the jury members for selecting the winners that we are celebrating tonight. The jury for the years 2021 and 2022 are Justice B.N. Sri Krishna, jurist and former judge, Supreme Court of India; Professor Dr. C. Rajkumar, founding Vice Chancellor and Dean, O.P. Jindal Global University; Dr. S.Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner, Election Commission of India; K.G. Suresh, Vice Chancellor, Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication. The Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards has acknowledged some of the finest names in Indian journalism over the years. These awards have set a benchmark for journalism in the country and are open to journalists from print, digital, and broadcast media. Ladies and gentlemen, let's proceed to the much-awaited awards presentation. I welcome once again Honorable Minister Shri Nitin Gadkari as well as Mr. Vivek Goenka seated here on the stage. I'd like to request you both to do the honors of giving away the awards this evening. We begin the ceremony with the first category, that of Hindi journalism. In the category of Hindi, the winners are Hindi. For 2021, the winner in print is Kirti Dubey, BBC News Hindi. And in broadcast is Jugal Purohit, BBC News Hindi. For 2022, the winner in print is Anand Chaudhary, India Today. And in broadcast, Hridesh Joshi, News Laundry. Congratulations. The second award is in the category of regional languages, and the winners are Regional languages. For 2021, the winner in print is Sabitha M.K. Matrubhumi Daily, and in broadcast, Sophia Bind,
Media One TV. For 2022, the winner in print is Anand Madhusudan Saudi, Kannad Prabha Daily, and in broadcast is Tejas Vaidya, BBC News, Gujarati. Congratulations. The next award is for the category Uncovering India Invisible, and the winners are Uncovering India Invisible for 2021. The winner in print is Monica Jha, 52.in, and in broadcast is Vishnukant Tiwari, The Quint. For 2022, the winner in print is Rupsa Chakraborty, The Indian Express, and in broadcast is Vikas Trivedi, BBC News Hindi. Congratulations. The next set of awards is in the category of reporting on politics and government, and the winners are Reporting on Politics and Government for 2021. The winner in print is Ritika Chopra, The Indian Express, and in broadcast is Team Brute India. For 2022, the winner in print is Prajwal Bhatt, The News Minute, and in broadcast is Abhishek Bhalla, IndiaToday.com. Congratulations. The next set of awards is for environment, science, and technology reporting, and the winners are Environment, Science and Technology Reporting for 2021. The winner in print is Jayashri Nandi, Hindustan Times, and in broadcast is Princess Giri Rashid, East Mojo. For 2022, the winner in print are Basant Kumar and Ayush Tiwari, News Laundry, and in broadcast, the winner is Team Down to Earth. Congratulations.
The next set of awards is for the category Business and Economic Journalism, and the winners are Business and Economic Journalism for 2021. The winners in print are Aditya Kalra and Steve Steklow, Thomson Reuters. For 2022, the winner in print is Toesh Mishra, The Economic Times. Many congratulations to you. Now for the category of investigative reporting, the winners are Investigative Reporting for 2021. The winner in print is Devesh Kumar Arun Gundane, Lok Satta, and in broadcast is Meghnad Bose, The Quint. For 2022, the winners in print are Zoya Hussain and Kera Rizwan, TRT World. And in broadcast category is Saurabh Shukla, NDTV. Many congratulations. The next set of awards is in the category of Foreign Correspondent covering India, and the winners are Foreign Correspondent covering India. The winners are Joanna Slater and Neha Masih, The Washington Post. Moving to the next category of sports journalism. The winners are Sports Journalism for 2021. The winners in print are Mahendra Singh Manral and Mir Vasavda, The Indian Express. For 2022, the winner in print is Andrew Amson, The Indian Express. Congratulations and thank you. The next set of awards is in the category of feature writing, and the winners are Feature Writing for 2021. The winner is Vandana Menon, The Print. For 2022, the winner is Raj Chengappa, India Today. Many congratulations. We now move on to the next category that accolates the best in the field of civic journalism. In the category of Prakash Kardale Memorial Award for Civic Journalism, the winners are Prakash Kardale Memorial Award for Civic Journalism for 2021. The winner is Vinod Kumar Menon, Midday. For 2022, the winners are Azifa Fatima,
Mala Krishna Ganeshan, and Prajwal Bhatt, the News Minute. Moving on to the category of photojournalism. The winners are Photojournalism for 2021. The winner is Gurinder Osan, Press Trust of India. For 2022, the winner is Abhinav Saha, The Indian Express. Congratulations. We now move to the last award category. The next award is for the evening is in the category of books, non-fiction, and the winners are Books, non-fiction for 2021. The winner is Vijay Gokhale, Penguin Random House, India. For 2022, the winner is Rahul Ramagundam, Penguin Random House, India. Congratulations and thank you very much. Please be seated. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for all our winners of the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards 2021-22. Thank you, Honorable Chief Guest Shri Nitin Gadkari ji, for presenting the awards. It is an absolute honor and privilege to have you here this evening. May I request you to please address the august gathering. मेरे मित्र आदरणीय विवेक गोयनका जी, जूरी के रूप में जिन्होंने काम किया है, जस्टिस श्री कृष्णा जी, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, रामनाथ गोयनका जी के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो सभी अवार्ड विजेताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। उन्नीस 1975 में जब 25 जून को इमरजेंसी लगी, उस समय मैं मैट्रिक के लिए परीक्षा देने वाला था, उसके 10वें साल, और उसी समय जो 2 साल है उसमें मेरे परिवार के अनेक लोग मीसा में अरेस्ट हुए थे, और मैंने उसी समय तय किया कि इमरजेंसी के खिलाफ काम करना। उस समय विशेष रूप से वो 2 साल का जो संघर्ष था, वो हम सब के लिए एक बहुत ही ऐसा इतिहास था कि जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। विशेष रूप से उस समय आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नीरेन डे जी के एक आर्गुमेंट के ऊपर काफी चर्चाएं हुई थी। जब न्यायमूर्ति महोदय ने पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति, उसको अगर पुलिस ऑफिसर गोली से मार देता है और उसके ऊपर अगर गलत है तो क्या उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने जवाब दिया था कि सर, इमरजेंसी है, वो ये नहीं कर सकता। एक प्रकार से जो स्थितियां थी वो बहुत ही चिंताजनक थी। अखबार में सेंसरशिप लगी थी,
और उस समय एक बुलंद व्यक्ति इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मैं महाराष्ट्र में था और विशेष रूप से लोक सत्ता, और जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन से उन्होंने संघर्ष शुरू किया, और इस संघर्ष में उनको काफी कीमत देनी पड़ी। मुझे याद है कि नानाजी देशमुख आज हमारे बीच में नहीं है, और भूमिगत रहकर सब कार्यों का विशेष रूप से ध्यान देते थे और पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। एक बार मुंबई में नानाजी के साथ मुझे रामनाथ जी को मिलने का भी मौका मिला। उनकी विचार, उनकी कृति, उनका व्यक्तित्व, ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सबके जीवन में है, और वो जो बात है वो इथिक्स वर्सेस कन्वीनियंस। चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, किसी भी फील्ड में ये दो बातें हमें अक्सर हमारे व्यक्तित्व को कंफ्यूज करते रहती है। रामनाथ जी के जीवन का ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में ये कंफ्यूजन कभी नहीं होने दिया। स्वाधीनता के पहले महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर और जब से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, तो मुझे एक याद है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि नदी का प्रवाह जब बहता है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली जो होती है, वो प्रवाह के साथ बह जाती है, पर जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है, और वही उसके जिंदा दिली का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके जीवन में यही था। अपने इथिक्स के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने लोकतंत्र के साथ अपनी कटिबद्धता रखी और वो संघर्ष करते रहे, और उस संघर्ष की कहानियां बहुत लोगों को कीमत चुकानी पड़ी, अनेक परिवारों को कीमत चुकानी पड़ी। और मेरे लिए तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी आती नहीं तो शायद मैं राजनीति में भी कभी नहीं आता। इमरजेंसी ने ही हमारे जीवन की राजनीतिक शुरुआत की। विशेष रूप से इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी को आधार क्या है, ये हम सब के चिंता का और चिंतन का भी विषय है। लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी और मीडिया, चार स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और मैं अक्सर ये मानता हूं कि हम चारों क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जितना इसके साथ कटिबद्ध रहेगा, उसमें लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा। और सवाल यही होता है कि आज जो हमारी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति, फैमिली सिस्टम है, उसके संस्कारों ने हमारे सबके जीवन को समृद्ध और संपन्न किया है। और एक बात यह भी जरूरी है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी बने, आत्मनिर्भर भारत बने, और हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। उस दृष्टि से तो हमारा प्रयास भी शुरू है और उसमें काफी यश भी मिल रहा है। पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम और उसके आधार पर हमारे जीवन मूल्य, इसके संस्कारों के आधारित हमारी जनता और जनता का नेतृत्व करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स, इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन होने की आवश्यकता है, क्योंकि संपन्नता ये बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसे के बिना, साधन संपत्ति के बिना कुछ नहीं होगा, पर संपत्ति, साधन संपत्ति और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये भी कोई जीवन का यथार्थ है, ऐसा भी नहीं है। विशेष रूप से अपने कन्विक्शन के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ
लोकतंत्र के लिए, समाज हित के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, 47 के बाद का इतिहास जो है, और हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो इस लोकतंत्र के इतिहास में जिनके नाम सुवर्णाक्षर से लिखे जाएंगे, जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाया, उसमें निश्चित रूप से रामनाथ गोयनका जी का नाम निश्चित रूप से होगा। मुझे याद है, मैं बड़ा युवावस्था में थे, दिन याद है, दत्ता सामंत हमारे बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्राइक कराया था, एक्सप्रेस न निकले, उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट था। काफी बड़ी उस समय की स्थितियां मैं मुंबई में रहने के कारण जानता था। पर एक कठिन परिस्थिति में भी एक बात रामनाथ जी की थे, न कभी झुके, न कभी झुकने के लिए उन्होंने तैयारी बताई। जो जो बातें उनकी थी, जो अपने कन्विक्शन के बात रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, उसके लिए लड़ते रहे। लड़ाई जोरदार होती रही, पर अंतिम विजय उनका हुआ, ये हर जगह पर देखने के लिए मिला। तो ऐसे रामनाथ जी के नाम पर ये पुरस्कार है। और पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और मैं आजकल ये मानता हूं कि केवल इंफॉर्मेशन देना ये पत्रकारिता का काम नहीं होता। तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, इसकी भी जानकारी आजकल अखबारों से मिलती है। मैं बहुत बार दो चीज़ों के बारे में मन में याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं एजुकेशन और संस्कारों से है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं अक्सर इस बात को याद रखता हूँ कि अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिल्ली में ही, वो हमने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया। तो उससे एग्रीगेट जो बचा, उससे इन्वायरमेंट तो बचा ही, पर सबसे पहली बात है कि इतना कचरा यूज करने से काफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हुई। दिन ब दिन हमारा देश बदल रहा है, और बदलते हुए देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हम वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास नॉलेज, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। और जब इन बातों के साथ हम जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो यंग टैलेंटेड लड़के हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है। मुझे याद है कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं मिला तो 400 युवा ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने कहा उनके पास इतना प्लांट आपके पास कहाँ है? तो बोले कहीं यहाँ से पार्ट लाते, और वो खुद एंटरप्रेन्योर बन गए। आज देश बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते हुए स्थिति में मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति के दृष्टि से धीरे धीरे किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, अब इस लड़ाई में आम जनता को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो नई जनरेशन है उसको नॉलेज की भूख है, साइंस की भूख है, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस क्या इसकी चिंता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना ये उसकी चिंता है, इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों बातों में नई जनरेशन काफी कॉशियस है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई स्पेशलाइज होकर जब पत्रकार काम करता है तो केवल वो एक पढ़ने के लिए कुछ लिखता है, ऐसा नहीं है। आपकी बहुत से जानकारियों से अनेक लोगों को विजन मिलती है, अनेक लोगों को उस नॉलेज से जो एहसास होता है उसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन होता है। म्यूजिक हो, फिल्म हो, नाटक हो, संगीत हो, हर जगह पर कोई ना कोई मैसेज समाज को जाता है, व्यक्ति के जीवन में उसका बदल भी होता है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जो रामनाथ जी के नाम पर जो पुरस्कार दिए गए उसमें जिन सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया वो सब्जेक्ट हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण,
दोनों का उपयोग करके लोगों के व्यक्तित्व को बदलने वाला संस्कार, ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन के कारण होता है। और नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो होती है वो अध्ययन और चिंतन के कारण मिलती है। और आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि सोशल मीडिया के कारण दुनिया में क्या हो रहा है ये तुरंत सब पास पहुंच जाता है। आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया इसको बहुत बड़े प्रमाण पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करती है। ये जो नए यंग जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से लेकर अनेक महत्वपूर्ण इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको आज ये रामनाथ जी के नाम पर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन लोगों का भविष्य में और बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मेरा विश्वास है कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में होगा। जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। हम बदलते जा रहे हैं, पर एक बात जरूर है कि बदलते हुए हमारी समाज व्यवस्था में हमने हमारी बेसिक बातों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केशवानंद भारती केस में कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो स्वाभाविक रूप से हमारे समाज की जो जीवन मूल्य है, इतिहास, संस्कृति और विरासत है, जिसके आधार पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम आधुनिकीकरण के पक्षधर है। समय के साथ हम जरूर बदलेंगे, पर जो स्ट्रक्चर हमारी समाज व्यवस्था का है, जिसके बदौलत हमारा इस सोसाइटी और हमारा देश खड़ा है, उसको मजबूत रखना भी हमारा कर्तव्य है। और मैं ये मानता हूँ, जो पहले बात मैंने कही थी कि इथिक्स वर्सेस कन्वीनियंस, ये सब क्षेत्रों में चल रहा है। मतभिन्नता ये हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय नहीं है, विचार शून्यता ही हमारी समस्या है। वी आर नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। ये जो बात आजकल होती है ये सबसे गंभीर है। जो लोग अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी नीतियों को, अपने मूल्यों को उसकी प्राइस पे करते पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये रामनाथ जी का चरित्र था। अब मुझे लगता है कि जिनको ये अवार्ड मिला है उनको निश्चित रूप से उनसे एक चीज तो अनुकरणीय है कि जो हमारे कन्विक्शन है, जो हमारे उसूल है, जो हमारी सिद्धांत है, जो हमारी नीतियां है, जिसको हमने लाइफ कन्विक्शन में स्वीकार किया है, उसके साथ हम चलते रहेंगे। चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, पर हम चलते रहेंगे। उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। हम यही कार्य एक प्रोफेशनल इथिक्स के रूप में करते रहेंगे। ऐसे करने वाले ही आप जैसे पत्रकार हैं और आपने उस क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए जूरी ने आपका चयन किया है। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आपका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के पुनर्निर्माण में निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट करेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। May I now request Mr. Ramnath Goenka, Executive Director, Indian Express Group, to present a special token to Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari. This wonderful portrait is made by Subhajit De, illustrator from the Indian Express. Thank you very much, sir. May I request you to take your seats, and I now invite Mr. Raj Kamal Jha, Chief Editor, the Indian Express, on stage to address the audience. Thank you. 1313. That is the number of
Ramnath Goenka Award applications that we got this year, 1,313. That's a record. That's a record in the last 18 years since we launched the Ramnath Goenka Awards. 1,000+ journalists and more than 24 authors sending in their best work, stories, and books. That very fact brings us hope. Hope when every day we hear intimations of journalism's mortality. Not many seem to care for us these days. I'm going to get into that later. Not many seem to care for us these days, except our parents and some of our best friends, and even those best friends who vote the way we do. I see many of the winners have got their parents this evening, so thank you very much for being there. We need all the wishes we can. Just take the last 1 month. I'm just taking 5 specific examples from last month. We had a judge from the court, High Court, who told a reporter in open court after a mildly unflattering story, but a very fair story, "I don't want to see you report on this court." That same judge resigns, joins a political party, and is all sugar and honey on television when everybody sings his praise. There's a journalist as well who joins another political party and gets a ticket. We have a journalist in this city who has to leave this city after 2 decades of living here because she wrote malicious stories. We have a leader who, when a journalist told him, when there was a reporter who asked him a question, he said, "Aapke malik ka kya naam hai?" And when a mob of his supporters roughed up the reporter, he said, "Usko mat maro yaar, usko mat maro." Then we have a few maliks who have gone down on bended knee, so comfortable in that posture that it hurts if they stand up. There is an ease of doing business, and there is a very specific unease of doing journalism. And that is why I really thank you, Honorable Minister Shri Nitin Gadkari, for being here this evening, for saying that good journalism is an imperative of good governance. It may not have the tangible appeal of Bijli, Sadak or Pani, or Jal Nal, Swachhta or Ayushman. It may be very hard to identify who is journalism's labharthi. But the stories we celebrate this evening, show the labh of journalism. They reveal stories that some don't want to be told. They stand vigil. They bring the voice of the street to the corridors of power. They introduce us to people and to ideas who we may never meet on our phones or in our living rooms. Sir, your being here this evening also reinforces the fact that Mr. Goenka talked about, the need for politicians to have broad shoulders
when it comes to journalism and journalists. Far away from the stage, we have wonderful evidence of that. We have the Lieutenant Governor, Mr. V.K. Saxena ji. We have Ravi Shankar ji. We have K.C. Tyagi ji. We have Abhishek. We have Danish Ali ji. This is the Ramnath Goenka coalition. In the election year, across party lines, it cuts across every party line. It is brought together by good journalism. That's a very reassuring image to end this evening with, 1 month before phase 1 of the Lok Sabha elections. Because let's not forget that it is not just the world's largest electoral exercise, it is the world's largest expression of free speech and choice. We have lots of work to do. So thank you very much, and I'll see you next year. Thank you. Thank you very much, Mr. Jha. Please do stay for a group photograph. I now invite Mr. Anand Goenka, Executive Director, the Indian Express Group, Mr. George Varghese, Group CEO, the Express Group, Dr. S.Y. Qureshi, and Justice B.N. Sri Krishna, and our partners for a group photograph on stage, and request all the winners of 2021 to please come up on stage for the photograph. Request everyone not to take selfies while the group photograph is being taken, because that would also get captured in the group photograph. Thank you. Thank you very much. And now request the 2022 winners to please come up for the group photograph. Request the 2022 winners to please come up. Once again, requesting all 2022 winners to please join for the group photograph.
once again, ladies and gentlemen, and congratulations to all the winners. All winners are requested to collect their original checks from Mr. Naveen Baswal and Ms. Soumya Kumar at the registration desk. Friends, an event of this scale could not have been achieved without the unstinting support from our partners, presenting partner TVS, co-presenting partner Adani, associate partners NBCC, Plutus IAS, Union Bank of India, Indian Oil, Gateway Distriparks and NTPC, education partner Sharda University, and writing instruments partner Luxor. Thank you for joining us. Please stay back for refreshments and good night.